Hello friends, a very good evening to all of you and welcome back once again on your favorite YouTube channel MBA Wallah. My dear friends, ये जो सिलसिला है फाउंडेशन क्लासेस का फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैट 2025, this should not stop. This should not stop so soon. So इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए I welcome all of you in the next lecture ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। आप सबको पता ही है कि हम ऑल्टरनेट वीक्स पे, ऑल्टरनेट मंडेज पे लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। सो टुडे इट्स द टर्न ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द टॉपिक इज पाई चार्ट्स। Now you all must be familiar about this topic, pie charts. Pie charts बहुत ही ज़्यादा familiar चीज़ है when it comes to questions on data interpretation. And today we are going to look at the basics of data interpretation in pie charts. So friends, a very good evening to all of you. Quickly confirm by writing yes if I'm clearly visible and audible to every one of you. Hello Ranjana, Varsha, Bridge Mohan, Dhruv, a very good evening. Felix, Divyansh, Sumant. Yes, I had solved it and learned it. Good, very good, Dhruv. So you are present in this lecture, and the basics about pie charts are so you have studied this already. Wonderful, great. So let's not waste our time and let's begin with today's lecture. ठीक है? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़े से बेसिक्स देखेंगे पाई चार्ट्स के, ठीक है? And then we will solve one complete set which is based on pie charts. Okay, once again I'll set the expectations right. ठीक है ना? तो अगर कोई स्टूडेंट आज के लेक्चर में इस एक्सपेक्टेशन से आया है कि भाई कैट लेवल के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली आज की क्लास में. दिस इज अ फाउंडेशन सीरीज. फाउंडेशन सीरीज will stick to whatever we have decided. फाउंडेशन का मतलब क्या है? बेसिक्स, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है? सो थ्रू दीज सेशंस we'll be focusing, we'll be putting stress on the basics, the fundamentals, and then we'll be solving some basic level of questions, some easy level of difficulty of questions, the questions which you may not expect to appear in CAT examination. CAT में तो नहीं आएंगे इस level of difficulty के, but yes, OMETS में ये वाला difficulty level आ सकता है. And after this series is over, like I told you, like I have promised you, after this series will be conducting many more YouTube series wherein we'll be raising the level of difficulty. ठीक है ना? Fine. How many lectures we have? Soumya, for logical reasoning and data interpretation, there are a total of 8 lectures which are there in this series. Similarly, for verbal, quant, and so on. So every day in the week, Monday to Friday, we have one session, and this series of sessions is expected to continue till 8 weeks. So 8 multiply 5, 40 sessions are there for all of you in this free YouTube series. जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस सेशंस मिस किए हैं, गाइस कम ऑन यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? व्हाई आर यू मिसिंग द प्रीवियस सेशंस? सो क्विकली आप 1 वीक लो एंड जो भी बैकलॉग है प्रीवियस सेशंस का एज फार एज फाउंडेशन सीरीज इज कंसर्न, उसको कंप्लीट करो, ठीक है ना? सारे के सारे सेशंस आपके पास YouTube पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे. YouTube पे सारे लेक्चर्स प्रेजेंट हैं एंड इन सारे लेक्चर्स को एक एक करके जल्दी से देख लो, ठीक है? चलिए, पाई चार्ट कितने पार्ट में कवर होगा? रुद्राक्षी, एज फार एज बेसिक्स इज कंसर्न्ड, 1 पार्ट ओनली, राइट? सो डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने टेबल्स देखा, बार ग्राफ्स, लाइन चार्ट्स, एंड देन आज पाई चार्ट्स का नंबर है. ओके, ऑलराइट. तो चलिए, बेसिक्स अबाउट पाई चार्ट. अब यहां पे पाई चार्ट में जो डेटा गिवन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. सो पाई चार्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं. So circle will be divided in different parts, okay, like this, okay, and then the values of each of these regions can be given in the form of absolute terms. Absolute terms का मतलब क्या है? Actual values given होंगी, or they may be given in the form of percentages. Generally you will find the values in terms of percentages, okay, right? And there is another way of pie chart, of drawing a pie chart, in which the values are given in the form of
I'll leave it on you. Let's see if you can tell me. So percentages के अलावा values और किस form में given हो सकती हैं? Come on, tell me. Absolutely, degrees. So they may be given in the form of degrees. नहीं यार, ratio नहीं, fraction नहीं, degrees की form में given हो सकती है pie chart में. Okay, fine. So let's first of all discuss a little bit about the difference between when the values are given in the form of percentages or when the values are given in the form of degrees. ठीक है? So percentage की अगर बात करते हैं, तो let's say एक pie chart given है. Pie chart is about the number of students in 5 different colleges. Okay, so these are 5 different colleges, A, B, C, D, E. All right, now this pie chart gives you the breakup of the number of students in 5 different colleges, A, B, C, D, E. Now A is with dark blue color, then B is orange, C is gray, and then D, and then E. This is given here. All right, fine. Now total number of students who are studying in these 5 colleges is given as 5,000. Right? Now here in this pie chart, all the values are given in the form of percentages. Okay, so now you very well know, you very well understand how to convert these percentages into numbers. So can you all tell me what will be the number of students studying in these 5 colleges? Can you convert these percentages in their numbers? Go ahead. विवेक, यू हैव टेकन पाइनियर बैच. ये मैं पाइनियर बैच में ही डिस्कस करूंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करते. ठीक है ना, जो एजेंडा है इस सेशन का वो डिफीट नहीं करना है. तो आपकी जब पाइनियर क्लास की बैच, पाइनियर बैच की क्लास होगी जो कल है, कल 8 to 10 है पाइनियर बैच की क्लास. सो यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन. ओके, एंड I'll clarify how you will have to proceed in pioneer batch. Okay, जल्दी से values लिख दो. So you can write all the values in a single message, in a single chat. A followed by the number, comma, B followed by the number, comma, and so on. So write all the 5 numbers. Come on, quickly. So this is when the data is given in the form of percentage. अब यहाँ पे pie chart बना दिया है. ठीक है? Now, is it difficult to read the data from here? No, it is not at all difficult. फाइन. अगर यही सेम चीज टेबल में प्रेजेंट कर देते बार ग्राफ के थ्रू या लाइन ग्राफ के थ्रू, तो भी हमें उतनी ही डिफिकल्टी होती या उतना ही इजीली हम डेटा रीड कर पाते जितना इजीली हम इस वाले पाई चार्ट में से रीड कर पा रहे हैं. तो वंस अगेन, जो लोग डेटा इंटरप्रिटेशन में इस चीज से घबराते हैं ना कि डेटा बार चार्ट की फॉर्म में है, डेटा पाई चार्ट की फॉर्म में है, लाइन चार्ट में है, टेबल में है, हिस्टोग्राम में है. सो एक बार अगर ये चीज, ये डायग्राम समझ में आ जाए जिसमें हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं, ओके, then you will not find any difficulty in reading, in picking up the values from the graph that is given. Okay, चलिए अब A is 10% of 5,000. 5,000 का 10% कितना होता है? 500. Okay, B is 15%, 750. बेसिक कैलकुलेशंस की आज बात नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. C is 20%, that is 1000. D is 25%, that is 1250. And E is 30%, that is 1500. Okay, so these are the respective values of A, B, C, D, and E. Right? Now, this same pie chart, instead of giving you percentages, they may give you these numbers inside this pie chart in the form of degrees. अब degrees का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं. ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज में टोटल कितना होता है? 100%. एंड टोटल 100% को 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है. तो अगर आप इन सब नंबर्स को ऐड करोगे विच आर रिटन इनसाइड द पाई चार्ट, 10, 15, 20, 25 एंड 30, इन सारे परसेंटेजेस का सम कितना आएगा? 100. ओके, सो 100% is the total and that 100% is divided in these 5 parts. तो ये तो हो गया परसेंटेज पाई चार्ट. डन.
Now same, all these values may be converted in the form of degrees. They would have given these values in the form of degree. डिग्री की फॉर्म में गिवन हो सकता था. डिग्री का मतलब क्या है? ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, सो एंगल फॉर्म्ड बाय दिस. अब इस चीज को क्या कहते हैं हम ज्योमेट्री की टर्म्स में? सेक्टर. एंगल मेड बाय दिस सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. इस फॉर्म में भी वैल्यूज गिवन हो सकती थी, राइट? अब परसेंटेज और डिग्री में डिफरेंस क्या है? परसेंटेज में टोटल 100 होता है एंड डिग्री में टोटल 360 होता है, राइट? फाइन. सो इट्स जस्ट द टोटल 100% will be divided in different parts or 360 degrees will be divided in different parts. All right? तो अगर मैं a का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a in terms of degree, अगर मैं बोलता हूं कि 36 डिग्रीज है, सो 36 डिग्रीज, अब ये चीज अंडरस्टैंड करो, टोटल 360 डिग्रीज है, उसका कितना परसेंटेज 36 डिग्रीज होगा? कम ऑन टेल मी. 360 टोटल है, उसका कितना परसेंटेज 36 डिग्रीज होगा? विकास, फ्रैक्शन वाइज यू आर करेक्ट, बट मैंने परसेंटेज पूछा है मेरे दोस्त. गुड इवनिंग नीतू, यू आर लेट इन दिस क्लास. या टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, 10-11 मिनट क्यों ही लेट होते हो तुम लोग? ओके, एब्सोल्युटली 10%, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे a का 10% लिखने की जगह 36 डिग्रीज लिखता हूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, तो 36 डिग्रीज देख के परेशान मत हो, माइंड में कन्वर्ट करो. 36 डिग्रीज कितना परसेंटेज होता है? 10%. तो अगर यहाँ पे डिग्री पाई चार्ट है और आपको 36 डिग्रीज एक वैल्यू दिख रही है, तो 36 डिग्री से मत डरो, वो 10% के ही इक्विवेलेंट है एंड उसको अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो आंसर 500 ही आएगा. ओके, राइट? फाइन. सो व्हाट आई जनरली डू एट द बिगिनिंग ऑफ पाई चार्ट्स, अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पाई चार्ट से डर लग रहा है, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि पाई चार्ट में वैल्यूज अगर परसेंटेजेस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वैल्यूज डिग्रीज में है तो प्रॉब्लम हो जाती है. तो आप क्या करो, इनिशियली ये जो डिग्री पाई चार्ट है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो. 3-4 ऐसे सेट सॉल्व करोगे तो आप क्या होगा, कंफर्टेबल हो जाओगे डिग्री पाई चार्ट्स को हैंडल करने में. एंड देन लेटर ऑन आपको डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ही आंसर फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, तो वो जो डर है ना डिग्री पाई चार्ट का अपने अंदर से निकालने के लिए क्या करना है, शुरू के 4-5 जो सेट हैं जिसमें डिग्री पाई चार्ट, लाइक पाई चार्ट में डिग्रीज में वैल्यूज गिवन है, तो आप डिग्रीज को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लो एंड देन फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर लो. अब डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपकी हेल्प करेंगी. तो सबसे पहले टोटल होता है 360 डिग्रीज जो रिप्रेजेंट करेगा 100%. ओके, तो आपने अभी मेरे को बताया कि 10% क्या होगा, इट विल बी 36 डिग्रीज, राइट? तो 5% कितना होगा? 10% अगर 36 डिग्रीज है तो 5% उसका हाफ हो जाएगा, विच विल बी 18 डिग्रीज. तो ये दो नंबर्स 10% 36 डिग्रीज एंड 5% 18 डिग्रीज, ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है टू कन्वर्ट डिग्री इनटू परसेंटेज और वाइस वर्सा. ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज most of the questions you will see angles as the multiples of 18 degrees or 36 degrees. ठीक है, as in I'll give you an example. Let's say 72 degrees. 72 degrees को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आंसर क्या होगा? गुड, ऑल ऑफ यू. सो पीपल, वंडरफुल, दोज हु आर रिस्पॉन्डिंग, जो भी मैं पूछ रहा हूं अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखने को मिलेगा. ठीक है ना, जो लर्निंग है ना वो ऐसे ही इंक्रीज होगी. आप अगर यहाँ पे बैठे हो सेशन में हाथ पे हाथ रख के कुछ नोट नहीं कर रहे हो, कुछ टाइप नहीं कर रहे हो, तो इतनी ज्यादा लर्निंग नहीं होगी. ठीक है, तो कम आउट ऑफ दैट शेल यार, हेजिटेशन छोड़ो, जो भी है सब कुछ टाइप करो यहाँ पे. ठीक है ना, तो 72 डिग्रीज 10 डिग्रीज सॉरी 10% होता है 36 डिग्रीज, 36 का डबल होता है 72, तो 10 का डबल हो जाएगा 20. तो 72 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 20% आ जाएगा. ठीक है, क्विकली 90 डिग्रीज कितना परसेंटेज होगा?
एब्सोल्युटली। 360 डिग्रीज 100% होता है, 360 का 1/4, 360 का 1/4 90 डिग्रीज होता है, तो 25%, राइट? ठीक है। सो लाइकवाइज द मल्टीपल्स ऑफ 18 डिग्रीज, 36 डिग्रीज, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही वाले एंगल्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये वाले एंगल्स मिल जाते हैं। ऑल्सो 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 10 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, ये तो नोट कर लिया। और थोड़ा सा मुश्किल बनाना होता है ना क्वेश्चन, तो वो क्या करते हैं, आई टेल यू, दे विल गिव यू एन एंगल लाइक, जस्ट नोट इट डाउन, 37.8 डिग्रीज, 37.8 डिग्रीज। ओके, अब फोकस करो यहां पे, 37.8 इज इक्वल टू 36 प्लस 1.8, 36 यहां से आ जाएगा और 1.8 यहां से आ जाएगा, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। 37.8% कितना, सॉरी 37.8 डिग्रीज कितना परसेंटेज होगा? उत्सव केयरफुल यार, केयरफुल, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यार। 10.5 इज द करेक्ट आंसर। उत्सव ये चीज देख, ये हो गया 10%, ठीक है। अब उसमें 1% ऐड नहीं किया, 3.6 डिग्रीज ऐड नहीं किया, उसमें 0.5%, 1.8 ऐड किया है। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा, 10.5%। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डिफिकल्ट बना दिया, बट ठीक है यार, इतना तो चलेगा ना, सबको समझ में आ रहा है तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एंड एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है। ओके, गॉट इट उत्सव, ग्रेट, लवली। ब्रिज मोहन 11 नहीं यार, 10.5, क्या अंदर, लाइक ब्रिज मोहन, हैव यू आल्सो अंडरस्टूड दिस थिंग? गाइस देखो, आंसर लिखने का ना फायदा यही होता है, दो स्टूडेंट्स ने गलत आंसर लिखा, मैंने पकड़ लिया उन्हें। ओके, ग्रेट। Satnajit Das, please ask this question towards the end of this session, ठीक है ना? I'll quickly entertain your doubt towards the end. Okay? So अब समझ में आ गया परसेंटेज और डिग्री पाई चार्ट में फर्क क्या हो सकता है। तो ये डिग्री पाई चार्ट है, राइट? तो 72 डिग्रीज ये हो जाएगा 20%। ओके, 81 डिग्रीज, कैन यू टेल मी 81 डिग्रीज कितना परसेंटेज हो जाएगा? 81 डिग्रीज बहुत आसान है, जल्दी से बता दो। 81 डिग्रीज कितना परसेंटेज होगा? 54 डिग्रीज, 36 डिग्रीज प्लस 18 डिग्रीज, ये हो जाएगा 15%, राइट? अब ये 81 एंड 45 ये दोनों 9 के मल्टीपल्स हैं, सो 25%, आई नो दैट इट इज 90 डिग्रीज, सो 2.5% विल बी 9 डिग्रीज, 2.5 के मल्टीपल्स, तो ये हो जाएगा 22.5%, एंड ये उसका आधा हो, सॉरी 90 का आधा हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 12.5%, राइट? ठीक है, सो 22.5% and 12.5%, you have these numbers, right? 108 डिग्रीज कितना होगा? 108 डिग्रीज, yes, this is 36 multiplied by 3. 36 multiplied by 3 is 108. So this is a multiple of 36. I can say that this will be 30%. All right. So 30% is the percentage conversion of this one. Okay. ठीक है, तो पाई चार्ट्स में बस यही चीजें ध्यान में रखनी है, otherwise everything is simple. So with this, let's quickly move on to the questions. Questions देखते हैं, and I want a response from each and every one of you. ठीक है, जितने ज्यादा रिस्पॉन्स होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा इस क्लास में। ओके, सो ऑल ऑफ यू, दिस इज द सेट ऑफ डायरेक्शंस। द पाई चार्ट गिवन shows the breakup of expenditures incurred in bringing out a book by a publisher. So expenditures different parts में divided हैं, as you can see on the left hand side. So the pie chart shows the breakup of the expenditures incurred in bringing out a book by the publisher. So you just read these values. मैं थोड़ा pie chart को बड़ा कर देता हूँ for clarity.
ठीक है. So for more clarity, I am showing you the pie chart. If you want to note down these percentages, फटाफट से कर सकते हो. Cost of paper, royalty, printing charges, advertisement charges, binders charges, transport charges, and miscellaneous charges. Okay, so this is the entire pie chart that is given. The pie chart will be given with the questions, so do not worry at all. अगर आप easily read कर पा रहे हो छोटा वाला pie chart जो इससे पहले वाली screen पे बनाया था मैंने, then there is no need to note down these values. Okay, shall we move on to the first question? Are you all ready to tackle some easy questions? Can it be done by, which is also, yes, Sagnik kar sakte hain, why not? But Sagnik, understand that for every conversion, if you are writing 108 divided by 360 into 100, okay, it will take time. Eventually ये तो बेसिक ही है ना, जो आपने फाइंड आउट किया आंसर, दैट हैज कम फ्रॉम दिस कैलकुलेशन ओनली. दिस इज द बेस, दिस इज द बेसिक ऑफ दैट कैलकुलेशन. बट मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड राइटिंग ऑल दीज थिंग्स. तो जो मैंने फर्स्ट क्लास में परसेंटेजेस में पढ़ाया था ना, आई थिंक आपने वो अटेंड नहीं किया. ओके, तो तभी मैं बोल रहा हूं फाउंडेशन सीरीज के सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है. अब कैट का एग्जाम है यार, हमें ये बेसिक्स पे फोकस नहीं करना, बेसिक्स को फिनिश करना है, फोकस करना है, बट बेसिक्स को जल्दी से फिनिश करना है. एंड जो कैलकुलेशन है ना, अगर आप भाई कन्वेंशनल तरीके से करोगे तो वो टाइम कंज्यूम करेगी. तो शॉर्टकट वेज, फास्टर वेज मैंने बताए थे आपको. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन. सो ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट क्वेश्चन, if author's royalty amounts to 30,000 rupees, then the binder's charges would amount to how much? There are 4 options, as you can see, option A, B, C and D. Quickly post your answers, as many responses as possible. मेरे को सारे स्टूडेंट से रिस्पॉन्स चाहिए अभी. Come on everyone. Just write your answer in the form of option A, B, C, D. Okay, that's it. A, B, C, D. Don't write anything else. Just write your answer as option A, B, C or D. Okay, all right, fine. Just one second. Oh, okay. Guys, I've just noted it down. मैंने notice किया just. There are around 60 students who are watching this session live and there are only 24 likes. Guys, is this fair? नहीं ना? So if you're liking this session, come on, go ahead and press the like button. Go ahead, quickly. अगर मजा आ रहा है सेशन में, मेरे सेशंस में मजा आता है, तो please press the like button. Okay? चलो. Now if author's royalty amounts to 30,000, author's royalty percentage breakup कितना है? This one, 30%. Okay? So this is 30% as per the question. 30% is 30,000, right? Now what we have to find is binders charges. So binders charges कितने हैं ये find out करना है. Binders charges is this, which is 12%. तो guys बहुत simple question नहीं है क्या? 30% is 30,000. So what will be 12%? 12% should be 12,000. Simple as that. Right? Okay. Any problem? So the correct answer should be 12,000. Right? So share and scroll, you are saying 10,000. Why? Give me the reason behind that. Okay. So author's royalty, which is 30% as per the pie chart. 30%. So 30% amounts to 30,000. तो टोटल कितना हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा? 100% निकाल लो. 100% will be 100,000. That is 1 lakhs. Okay. So 1 lakh टोटल हो जाएगा. अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे बाइंडर्स चार्जेस which is 12%,
वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बाइंडर्स चार्जेस कितना है 12%, 12% ऑफ 1 लाख विल बी 12,000. So the final answer should be 12,000. I hope we are clear with this. Okay. So the correct answer of this question will be option C. Option C is the correct answer. All right. चलिए, without making any error now, try and solve the second question. So second question on your screen. What should be the central angle of the sector for transportation charges in degrees? Be careful. We have just discussed how to convert degree into percentage or percentage into degrees. So transport charges, convert it in terms of degrees. And write your answer in the form of option A, B, C or D. Okay. So central angle for transportation. Transportation कौन से कलर से है यहाँ पे? ग्रीन कलर से. ग्रीन कलर में परसेंटेज कितना गिवन है? 4%. So basically I have to find out the angle, the central angle corresponding to 4%. Right? Now total angle कितना है? 360 degrees. Okay? 1%. 1% कितना होता है? 3.6 degrees. I need 4%. Angle कितना, sorry, percentage कितना given है? 4% for this. Okay. So 4% will be 4 multiplied by 3.6. That is 14.4 degrees. So 4% को degrees में convert करना है. Answer will not be 4. Question में बोला गया है कि percentage को angle में convert करना है. Right? So 14.4, option B, not option C. Okay, some of the students have given option C as the answer. Right? So answer will be 14.4, not 144. Vivek, it's a small request. Answer सिर्फ एक बार लिखो, ठीक है? Right? So please do not spam the chat box. Answer अपना एक बार लिखो, please. It's a small request to you. Right? Any doubt? Any problem? Anyone? Yes, Satnajib. So basic way of finding the answer, expression आपने सही लिखा है, but that is not the fastest way. Okay, चलिए next question, question number 3. If the advertisement charges amounts to 18,000, then the total expenditure incurred in bringing out this book is how much? No problem, Vivek. यार, it's absolutely fine. Sometimes we get excited, ठीक है ना? We want to be seen, we want to be visible. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सॉरी मत लिखो बस. Okay, it's absolutely fine. Just take care of whatever I've told you. All right, Satnajib, share and scroll. Sumant, जल्दी से आंसर निकालो. Option C, option D, these are the two answers that I'm getting. If the advertisement charges amounts to 18,000, then the total expenditure incurred in bringing out the book is how much? Careful, there are some students who are making mistake. Don't do that. Okay. Advertisement charges. Advertisement charges, yellow color, ये वाला है 18%. So question says that 18% is corresponding to 18,000. Okay. And they want 100%. They want total expenditures, right? So 18% अगर 18,000 को represent कर रहा है, तो 100% कितना करेगा? 100,000 को represent. So 100,000 means 1 lakhs. So 1 lakh, that is option C will be the correct answer of this question. Vivek, is it clear? Option C is the correct answer.
Anjana, Naman, are you all clear with this? So 18%, 18,000 है तो 100% कितना हो जाएगा? 100,000. 100,000 कितना होता है? 1 लाख. तो 1 लाख ऑप्शन सी आंसर होगा. ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा. ओके, करेक्ट. ठीक है ना. रोशन, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट. आपने नो लिखा है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज गो अहेड, मेंशन दैट डाउट, आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The miscellaneous charges amount to 2000 and total 1 lakh, नहीं, total 12,500 copies of the book are published. अब थोड़ा सा difficult question है. Miscellaneous charges amounts to 2000 and total 12,500 copies of the book are published. What is the cost per copy at which book must be priced if the publisher wants a profit of 5%? Take your time, take your time. I'm again saying this thing, please take your time. Mahi, please take your time. आराम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है. Okay, now we'll solve this question in 2 parts. Part number 1, I am looking for an answer from you. मेरे को आंसर चाहिए आपसे. What is the total cost? What is the total cost? They have given the miscellaneous charges 2000. Miscellaneous charges अगर 2000 है, so just read this part. Okay, just read this part of the question. Miscellaneous charges are 2000. Look at this pie chart and tell me what are the total charges of printing this book. Total charges कितने हैं? Absolutely. So miscellaneous charges कितना है? 2%. Okay, यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्राफ में गिवन है, क्लियरली गिवन है, miscellaneous charges are 2%. Okay, now 2% corresponds to 2000, so total will correspond to 100,000 or 1 lakh. ठीक है. So total charges of printing how many copies? 12,500 copies. Total charges, total investment, total money spent, कुछ भी बोल लो, इतना total money spent हुआ है, कितना? 1 लाख रुपीस. और कितनी बुक्स पब्लिश हुई है? 12,500. ओके, सो कॉस्ट पर बुक will be equal to 1 lakh divided by the number of copies which are printed, 12,500. Okay, so what is the cost incurred per book? ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करके इस वैल्यू को क्लैरिफाई कर दो. Now Krishna is saying कलर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा सही से. गाइज कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या कलर आइडेंटिफाई करने में? यहाँ पे बार ग्राफ को रीड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? यस और नो? एवरीथिंग इज फाइन? ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन यार. ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है यार, मैंने स्टार्टिंग में बड़ा वाला ग्राफ दिखाया था तो वहां पे वैल्यूज लिखी हुई थी. चलो, सो ये कॉस्ट पर बुक कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 8 रुपीज. 1 लाख को 12,500 से डिवाइड करना है, इट विल कम आउट टू बी 8 रुपीज. ओके, सो मेरा जो खर्चा आया है, माई कॉस्ट पर बुक इज 8 रुपीज. नाउ आई वॉन्ट अ प्रॉफिट ऑफ
5%। सो प्रॉफिट ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब मुझे बुक को कितने में सेल करना चाहिए, मुझे बुक को कितने में सेल करना चाहिए? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑफ 8 रुपीज। 8 का 5% अगर कैलकुलेट करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 40 पैसा, 0.4 of a rupee. Okay, so cost price is 8, profit is 0.4. So selling price of the book will be 8 plus 0.4, that is 8.4 rupees. So the book must be priced at 8.4 rupees to have a profit of 5%. Okay, so the correct answer is option D. माही सेज एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ग्राफ को रीड करने में, बट कलर्स तो क्लियर है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अगेन आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, समझ नहीं आया, ठीक है मैं दोबारा से समझा देता हूं। सो फोकस ऑन दिस। मिसलिनियस चार्जेस 2000 थे, तो टोटल चार्जेस, टोटल मनी स्पेंड 1 लाख रुपीज हो गया। 1 लाख रुपीज में यहाँ पे कितनी कॉपीज पब्लिश हुई इस बुक की? 12,500। सो 12,500 कॉपीज को पब्लिश करने में मेरा खर्चा कितना आया? 1 लाख रुपीज का। तो पर कॉपी के लिए खर्चा कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 12,500। डन, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 8 रुपीज। सो 8 रुपीज मेरे स्पेंड हुए हैं, राइट। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए 5% का, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विल बी द प्राइस एट विच आई विल बी सेलिंग द बुक। तो अगर मैं 8.4 रुपीज पर बुक में सेल करता हूं तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइंडर्स चार्जेस अमाउंट्स टू 6,000, then the expenses on the cost of paper will be how much? अगेन यूनिटरी मेथड यूज करते रहो, आंसर आता रहेगा। विवेक प्लीज राइट इट ओनली वंस, थैंक यू। चलिए, सो बाइंडर्स चार्जेस, सो बाइंडर्स चार्जेस क्या है? 12%। सो 12% इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 6,000, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ पेपर। सो कॉस्ट ऑफ पेपर, दिस वन इज 10%। सो 10% कितना होगा? 12% 6,000 है, 12 का आधा 6,000। सो 10%, 10 का आधा कितना होता है? 5। सो 5,000। ओके, यूनिटरी मेथड यूज हो रहा है यहाँ पे हर जगह पे। सो आंसर विल बी 5,000, 5,000 विच इज ऑप्शन ए। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, नाउ अंजना हैज गिवन अ रॉन्ग आंसर। अंजना, 6,000, व्हाई 5,000 should be the answer? Anjana, tell me if you are clear or not. Yes, Varsha, Lord Unitary. Applicable everywhere. Okay, so Anjana, please clarify, are you clear with this? Yes or no? सर कलर पता नहीं चल रहा। सुमंत यार, किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही? आई एम रियली सॉरी अगर ज्यादा कलर में प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है ना। एक सेकेंड, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल ऑफ यू। लास्ट क्वेश्चन, द प्रिंटिंग चार्जेस आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन रॉयल्टी? Printing charges are what percentage more or less than royalty?
ऑल राइट, ठीक है. नाउ ऑल ऑफ यू हैव गिवन ऑप्शन बी एज द आंसर एंड विच इज, आई एम सॉरी टू से, इनकरेक्ट, गलत है. समझते हैं क्यों, क्यों गलत है. ओके, ऑल ऑफ यू फोकस हियर. I'll be telling you two things. Now, first of all, what you have calculated, जो आपने कैलकुलेट किया उसको क्या बोलते हैं, और एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है वो देखेंगे. सो प्रिंटिंग चार्जेस, यहां से प्रिंटिंग चार्जेस कितना है, 24%, 24%, राइट. एंड रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी इज 30%. दिस इज 30%. ओके, now listen to this very carefully, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Printing charges are 24% of the total charges and royalty is 30% of the total charges. Okay, now the direct difference between the percentage values में डायरेक्ट अगर आप डिफरेंस देखते हो, 30% एंड 24% के बीच का डिफरेंस, इस डायरेक्ट डिफरेंस को हम बोलते हैं परसेंटेज पॉइंट्स. आई रिपीट दिस. सो ये जो डिफरेंस है बिटवीन परसेंटेजेस, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं परसेंटेज पॉइंट्स. ओके, आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल फॉर दिस. ओके, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं. देर आर टू पर्सन्स A and B. ओके, एंड दे हैव अटेम्प्टेड एन एग्जाम. एक एग्जाम था उनका जिसका टोटल was 200 marks. Okay, now A has scored 75% and B has scored 60%. So can you tell me the marks of A and B? A और B के मार्क्स बताओगे जल्दी से. यहां पे फोकस कर लो और सारी चीजें छोड़ दो. A और B के मार्क्स, A ने 75% स्कोर किया है, B ने 60% स्कोर किया है. तो मार्क्स ऑफ A विल बी 150, right? Sumant is saying, guys, do like and subscribe. Thank you, Sumant, for such a kind post. Okay, guys, go ahead यार. Sumant बोल रहा है like करो. मेरा तो आपने सुना नहीं, ठीक है. I requested you to like this session, but you have not listened to me. So go ahead यार, like करो session को. So 150 and 60% will be 120, right? ठीक है. Now, if I'll ask you, marks obtained by A are what percentage points more than marks obtained by B? मैं रिपीट कर रहा हूं, A और B में percentage points में कितना डिफरेंस है? तो marks obtained by A are 15% points more than B, और marks obtained by B are 15% points less than A. Done? ठीक है. तो डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेजेस इज कॉल्ड परसेंटेज पॉइंट्स. सो A is 15% points more than B. B is 15% points less than A. But if you'll have to look at the question, which is A is what percentage more than B? Okay, A is what percentage more than B? तो मार्क्स कितने हैं, 30 ज्यादा है अपॉन 120 इंटू 100. तो बेसिक जो परसेंटेज का लॉजिक है वो अप्लाई होगा. सो 30 अपॉन 120 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 25%. ओके, अब इस क्वेश्चन को विदाउट कन्वर्टिंग इनटू मार्क्स, इसके बिना भी कर सकते हैं हम. कैसे? 75 60 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100. आंसर वही आएगा 25%. ऑलराइट, तो इसके लिए मुझे एक्चुअल मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेम इन दिस क्वेश्चन, इस चीज के लिए मुझे एग्जैक्ट चार्जेस जो है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो मुझसे यहां पे क्या पूछा गया है, प्रिंटिंग चार्जेस विच आर 24% ऑफ टोटल चार्जेस आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन रॉयल्टी. तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग चार्जेस तो लेस हैं, 24 इज लेस देन 30, राइट.
तो मोर वाले जो ऑप्शंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब 24 30 से कितना कम है? 6 डिवाइडेड बाय, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 30 इंटू 100। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 20%। सो 20% लेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, good Saloni, so you have done it using the last method. Wonderful, lovely, absolutely correct. So friends, option C will be the correct answer. So ये चीज यहां पे गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसने क्वेश्चन बनाया है वो चाहता है कि आप इन दोनों में से एक ऑप्शन मार्क करो, बट ये चीज नहीं करनी है, राइट? सो टुडे यू हैव लर्नड अ न्यू थिंग, न्यू कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स, राइट? सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज यहीं पे ही रुकते हैं। इट वाज फन हैविंग हियर, राइट? सर एक आपने लिया और दूसरे में मैक्स, ये समझा दिया प्लीज। विवेक समझ में नहीं आया सर, एक में आपने लिया और दूसरे में मैक्स, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। तो इसका मतलब है कि आपने यार परसेंटेजेस की क्लास अटेंड नहीं की हुई है, बेसिक्स की। आप बोल रहे हो एक में मैंने कम वाली वैल्यू दी, एक में ज्यादा। क्वेश्चन समझो क्या था। A is what percentage more than B? Than B बोला हुआ है तो B डिनोमिनेटर में आएगा। यहां पे प्रिंटिंग चार्जेस आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन रॉयल्टी चार्जेस, सो रॉयल्टी चार्जेस नीचे आएंगे। बस ये फर्क है। ओके फाइन। यस रंजना, आज क्लास बहुत जल्दी ओवर हो गई, इतना ही लॉजिक था, ठीक है, बट डेफिनेटली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक? ओके, now next Monday I'll be coming up with the next session on logical reasoning, which will be on games and tournaments second class. last Monday हमने games and tournaments 1 किया था, जिसमें हमने knockout tournaments देखे थे। Now in the session of games and tournaments on next Monday I'll be teaching you the basics of round robin tournaments, right? So friends, that's all from my side. Yes, a little early today, but I'll have to go. This was the entire agenda of this lecture. I'll see you again. Have a good night. Bye bye.